So most of the videos that we do are surrounding female skincare routines and their concerns कि उनको skin में क्या problems हो रही हैं and how to tackle them. So today we are going to be talking about something very different yet important. हम आज एक male skincare routine and male skin concerns के बारे में बात करने वाले हैं. Hi, I'm Dr. Kriti. I'm the consultant dermatologist and director of Kiara Lifestyle Clinic. And today we are focusing only on male skincare routine because we are forgetting that the skin type is slightly different. तो कुछ differences हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, but more or less there are things which are similar also. So let's understand कि male skin, if we compare it to a female one, is slightly thicker. तो उसमें oil production and wrinkles ये ज़्यादा prominent होते हैं because oil production ज़्यादा है तो इसलिए acne भी ज़्यादा strong, मोटे और stubborn होते हैं. So when someone is dealing with problems which are relating to oil production like acne, seborrhea, तो treatment थोड़ा सा aggressive हो सकता है. Similarly, signs of aging like wrinkles are deeper in males, तो उनको भी हमें tactfully handle करना चाहिए. But other problems like the progression of aging, loss of collagen and elastin and the sagging, that part is almost similar, तो वो हम same तरीके से deal कर सकते हैं. Coming on to the structural change, because the skin is thicker, तो sometimes हमें double cleansing या फिर एक cleanser appropriately choose करना चाहिए. But the types of cleansers we use and the number of times we should wash our face remains the same. Coming on to the routine that one should follow. अगर मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन्स की बात करें तो डेफिनेटली AM/PM रूटीन इज समथिंग सिमिलर फॉर मेल्स. हमें क्लेंजिंग करनी है, देन टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करनी है, विच इज़ फॉलोड बाय अ गुड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. नाउ इस रूटीन में ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए अगर कोई स्किन केयर कंसर्न नहीं है लाइक पिगमेंटेशन और एक्ने. If you have these concerns, then definitely active ingredients like vitamin C or salicylic acid or clindamycin for treating acne can be added in your morning skincare routine. अगर नाइट में हमें क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग करनी है उसके साथ साथ वी कैन यूज़ सीरम्स विच आर आइदर बेस्ड इन hyaluronic acid or vitamin C. If you are looking for anti-aging, we can add products like salicylic acid or glycolic acid which will act on acne. We can also add things like kojic acid and ferulic acid अगर pigmentation हमारा concern है तो. So ये एक सिंपल सीरम की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. So नाइट में वी वॉश आवर फेस, हमने फिर सीरम लगा के we top it up with the moisturizer. It is almost similar to our morning skincare minus the sunscreen. अगर हम स्किन कंसर्न्स की बात करते हैं तो डैंड्रफ एक बहुत कॉमन कंसर्न है जो स्कैल्प में होता है इन पीपल हु हैव ऑयली स्किन. सिंस मेल्स प्रोड्यूस मोर सीबम एंड मोर ऑयल, दे आर मोर प्रोन टू सच प्रॉब्लम्स. सो वी शुड रेगुलरली बी एडिंग अ मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन आवर हेड वॉश. इवन इफ वी डोंट गेट डैंड्रफ रेगुलरली, हमें once in 2 weeks ऑन अ रूटीन हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेना चाहिए विच इज़ बेस्ड आइदर आउट ऑफ केटाकोनाजोल और क्लोट्रिमazole, and that will be quite effective in maintaining sessions also. Second thing that we can talk about is back acne, because males are very prone to getting thick and prominent back acne. These acne actually leave marks also and they are quite thick and painful. तो अगर हमें oral medication की ज़रूरत है उसके लिए हमें एक dermatologist को मिलना होगा जो कि medicines prescribe कर सकते हैं. On regular basis हम लोग washes which are based out of benzoyl peroxide या फिर salicylic acid use कर सकते हैं. For only marks even azelaic acid based soap या cleanser हमें काफ़ी effective रहेगा. हाँ, हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं लाइक कार्बन पील और सैलिसिलिक पील जिसके लिए हमें क्लिनिक जाना है एंड रेगुलर ट्रीटमेंट्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सच एक्ने. Next we can come on to treatments persisting to anti-aging. Now definitely aging is something जो कि male skin में भी दिखती है and wrinkles actually ज़्यादा prominent है. तो we want to use things like hyaluronic acid on routine basis. But अगर we want to treat the wrinkles, then the procedure is same for even males. We have to go to a dermatologist. We can start with procedures like Botox or fillers if that is our concern. We can definitely go for microneedling or radiofrequency based treatment
preference for a tight and lifted skin. Next, we can talk about a very important problem, which is sweating. There is excessive sweating which is seen in males, and that can be in the areas like underarms or even sweat. This is called hyperhidrosis, and उसके वजह से कभी-कभी body odor या फिर staining of clothes is also a problem. For this, we can again use products which are AHA and BHA based, because that will help in exfoliation. We can also speak to a doctor about treatment of hyperhidrosis if Botox is the solution that will work in your scenario, or things like deodorants which are based of antiperspirants that can also help in reducing the odor. The next thing which is also there in male skin is tanning. Hyperpigmentation जब हम sun में जाते हैं वो male skin में भी बहुत prominent है, वो के foreheads पे, forearms पे बहुत prominently दिखती है. Sunscreen here plays a very important role, because ये पहले वाली pigmentation को कम करने में भी help करता है और आगे की pigmentation prevent भी करता है. So regular and use of good sunscreen is important in preventing tanning. If you have a query regarding male skincare routine, put down in the comment below and share this video with a male friend who is looking to add skincare routine into their regime. Like, share and subscribe to our YouTube channel for more such informative videos. Press the bell icon for future notifications.